we start with the new unit, that is electromagnetic waves. Practically most important unit. Practically most important unit. Wireless communication, everything is based on electromagnetic waves. But first of all, we discuss about the displacement current and need of displacement current. After that, we discuss about the electromagnetic waves. Okay? Now, as we know that from Ampere's circuital law, Ampere's circuital law, line integral of magnetic flux density for a closed loop is equals to mu naught times of total current. Is the Ampere's circuital law. Okay? Now, here we take two diagrams. In the capacitor, and here it is the source of EMF with one-way key, and there is a closed loop C. Figure 1. Key pressed, capacitor charged. Now in second diagram, we take again closed loop, but it's passing through the air gap. It's figure 2. Okay? Now, in this diagram, in the conducting wire, there is a closed loop and conducting wire passing through the closed loop. That's why Ampere's circuital law is valid. That means B dot dl for closed loop, it is equals to mu naught times of current. But if we take figure 2, and there is no conduction current. There is no conduction current. In the air gap, there is no conduction current. That's why P dot dl equals to 0. Is about the Ampere's circuital law. लेकिन it is found that कुछ टाइम तक यहाँ पर करंट मिली, लेकिन Ampere's circuital law के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 0. लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ करंट थोड़ी देर के लिए मिली. जैसे स्विच ऑफ करेंगे तब भी थोड़ी देर के लिए करंट मिली. क्यों मिली करंट? It is explained by Maxwell. Maxwell ने इसको एक्सप्लेन किया with the help of displacement current. This concept given by Maxwell. So what is displacement current? Current comes into play in addition of conduction current due to change in electric field or electric flux. Current comes into play in addition of conduction current due to change in electric field or electric flux, known as displacement current. Means according to Maxwell,
id directly proportional to d phi over dt, or id equals to epsilon naught d phi e over dt is the displacement current. And according to Maxwell, this term is missing in Ampere's circular law. According to Maxwell, the complete formula should be B dot dl equals to mu naught I plus I. Is the modified Ampere's circular law, or Ampere Maxwell law, mu naught I plus I is the principle of continuity, but at a time only one exists. अगर I होगी तो ID नहीं होगी, और अगर ID है तो I नहीं होगी. According to principle of continuity, at a time only one exists. For example, if we take figure 1, first figure के ID will be 0, क्योंकि एक लूप है, उसके अंदर से वायर पास हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगी. सो ID इक्वल्स टू 0, बट I इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? कंडक्टिंग वायर है, क्लोज लूप है, उससे पास हो रहा है, तो कंडक्शन करंट तो 0 होगी नहीं. I is not equal to 0. That's why for figure 1, B dot dl equals to mu naught I. Okay? Now we take figure 2. We take figure 2, second figure. is the air gap, और एयर गैप में कंडक्शन करंट नहीं हुआ करती है. सो I equals to 0. But during charging or discharging of the capacitor, some electric field change, electric flux change, and if electric flux change, displacement current comes into play. So ID is not equal to 0 for figure 2. So B dot dl equals to mu naught ID according to Maxwell. लेकिन अभी भी कंसिस्टेंसी प्रूव नहीं हुई, क्योंकि यहां पर आ रहा है mu naught I और यहां आ रहा है mu naught ID. तो मैक्सवेल ने ID को I के बराबर प्रूव करके दिखाया, यानी ID is also equals to I in magnitude. दो कैसे? Now ID equals to epsilon naught d phi over d. Okay, and from Gauss theorem we know that phi q upon epsilon naught. So ID equals to epsilon naught upon epsilon naught dq over dt, or it is dq over dt, and dq over dt is known as I. That's why ID equals to I, and displacement current ultimately equals to conduction current. और इसीलिए मैक्सवेल ने बताया कि यहाँ एयर गैप होने के बावजूद भी जो करंट यहाँ थी वही करंट यहाँ मिल गई फॉर सम टाइम.
कब तक? जब तक कि सैचुरेशन स्टेट में आ जाए, जब तक कैप्सूल फुल्ली चार्ज ना हो जाए, जब तक कैप्सूल फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए। उसके बाद जब स्टडी स्टेट में आ जाएगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, आईडी इक्वल्स टू 0। इसलिए फिर यहाँ करंट मिलना बंद हो जाती है। जब कैप्सूल फुल्ली चार्ज हो जाता है, स्टडी स्टेट में आ जाता है, तो वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, आगे पास नहीं करता है। उसका रीजन ये है, स्टडी स्टेट में आते ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है, आईडी 0 हो जाएगी, और जब आईडी 0 होगी तो यहाँ पर करंट आपको नहीं मिलेगा। जब कैप्सूल चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो, ड्यूरिंग दैट some flux will change, and if flux change, displacement current will exist, और इसीलिए यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन मिलता रहता था, in the need of displacement current, and this concept given by Maxwell. So that's why Maxwell या Ampere Maxwell's law will be B dot dl mu naught I plus I, or mu naught I plus ID means epsilon naught d phi E over B. The Ampere Maxwell's law or modified Ampere's circuital law. क्लियर? दोबारा देख लो। Here we discuss about the displacement current. Current comes into play in addition of conduction current known as displacement current. तो जरूरत क्या पड़ गई? What is the need of displacement current? What is the need of the displacement current? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैक्सवेल लॉ के पास, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए। नाउ यहां देखें आप, here we take two diagrams. In first diagram there is a closed loop and one conducting wire passing through it, and if we apply here Ampere circuital law, it is adjust. But for figure 2, this closed loop passing through the air gap, और एयर गैप में कंडक्शन करंट नहीं हुआ करती है, दैट्स वाई I equals to 0. इनकंसिस्टेंसी होगी, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल और राइट हैंड साइड्स आर अनइक्वल, इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए मैक्सवेल ने काम किया, और मैक्सवेल ने बताया कि एम्पियर एक टर्म मिस कर गए, एंड द मिसिंग टर्म इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। और इस डायग्राम की बात करें तो इसमें कंडक्शन करंट एग्जिस्ट कर रही है, और मैक्सवेल ने ये बताया कि जो परफेक्ट फॉर्मूला बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, म्यू नॉट आई प्लस आई डी, और एट ए टाइम केवल एक एग्जिस्ट करेगा, जब आई होगी तो आई डी नहीं, जब आई डी होगी तो आई नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे हम लोग साथ साथ आई प्लस आई डी। जैसे फर्स्ट डायग्राम में देखें आप, तो आई जीरो नहीं होगी लेकिन आई डी जीरो हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट्स व्हाई म्यू आई। इन डायग्राम सेकेंड देयर इज नो कंडक्शन करंट, तो आई जीरो हो जाएगी, लेकिन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होगी कैपेसिटर की, और अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है
इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, भले वो बहुत कम टाइम के लिए हो, तो आईडी एग्जिस्ट करेगी. सो मी नॉट डी एल इक्वल्स टू मी नॉट आई डी. ओके ना, लेकिन कंसिस्टेंसी तो अभी भी प्रूव नहीं हुई. यहां पर आई है और यहां पर आई डी. तो मैक्सवेल ने आई को आई डी के बराबर प्रूव करके दिखाया. आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी. फ्रॉम गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहां वैल्यू पुट कर दी तो आई मिला डी क्यू ओवर डी टी. और आपको पता है डी क्यू ओवर डी टी इक्वल्स टू आई. Hence consistency is the need of displacement current. Clear? और ये जो फॉर्मूला है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ कहलाता है, और इट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी. ठीक है, चलो एकदम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर. तो इसके स्टेटमेंट सुने आप. So, first numerical, a parallel plate capacitor has circular plate, each of radius 6 centimeter. It is charged such that the electric field in the gap between its plates rises constantly at the rate of 10 to the power 10 volt per centimeter per second. What is the displacement current? एक बार फिर स्टेटमेंट लेके चलेंगे और क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे और सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को. Now, a parallel plate capacitor has a circular plate each of radius 6 centimeter. मीटर में कन्वर्ट कर लिया. It is charged such that the electric field in the gap between its plates rises constantly at the rate of 10 to the power 10 volt per centimeter per second. And dE over dt given. ओके, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? आईडी कैलकुलेट करना है और आपको पता है आईडी को एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी. Phi goes to EA. What is equals to ये फॉर्मूला बन गया. अब वैल्यू लगा देते हैं. सॉल्व करेंगे तो आईडी मिलेगा 0.1 एम्पियर. 0.1 एम्पियर. इस तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को सॉल्व कर पाएंगे. एक और न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग.
डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर ही। There is a parallel plate capacitor of capacitance 2 microfarad. The voltage between the plates of parallel plate capacitor is charging at the rate of 6 volt per second. What is the displacement current in the capacitor? Means again we want to calculate the displacement current. तो क्या क्या given है वो देखो. There is a parallel plate capacitor of capacitance 2 microfarad. Capacitance is given. The voltage between the plates of parallel plate capacitor is changing at the rate of 6 volt per second. What is the displacement current of the capacitor? Okay, ये calculate करते हैं. Okay, so what is the formula of displacement current? Epsilon naught d phi over dt. Epsilon naught phi equals to EA over dt, or ID equals to epsilon naught A, as you know that E equals to V over D. And we also know that from electrostatic C equals to A epsilon naught over D. So it equals to C dV over dt. It's the final formula for this numerical C dV over dt. Or ID equals to C is given 2 10 to the power minus 6 and dV over dt is 6. So it is 12 microampere. It's 12 microamperes. ये दो न्यूमेरिकल्स थे और ये बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स थे. ओके